when the rotor is rotating, it is showing two kinds of properties. The specific properties that we are going to use in making a gyro compass is rigidity in space and precession. Not precision, precession. I think we have already talked about the rigidity in space in the last classes. I think 2 class we had. In that we had talked about rigidity in space. Do we remember that? Yes, sir. Okay. So Mohit, you only tell me little bit about rigidity in space. We are just revising it. It is also called gyroscopic inertia. It means when a gyroscope is freely moving, rotating, it resists any external force to change its direction or uh, rotation. Yes, very good. So it will remain rigid in whatever it is doing. अगर वो घूम रहा है तो घूमता रहेगा. जो पार्टिकल्स जो है, एक बाहर की तरफ फोर्स और एक भीतर की तरफ फोर्स, दोनों इक्वल एंड अपोजिट. तो एक पार्टिकल जो है एक रेडियस पे घूमता रहता है और उसमें उस पार्टिकल को बस यही दो फोर्स है, एक बाहर की तरफ एक भीतर की तरफ. इधर उधर करने का कोई फोर्स नहीं है. तो ऑल द पार्टिकल्स कीप ऑन रोटेटिंग लाइक दिस इन द सेम प्लेन. और रोटर अगर इस सेम प्लेन में घूमता है तो स्पिन एक्सिस जो है वो भी फिक्स रहता है अपने एक डायरेक्शन में. एग्जाम्पल देखा था हमने, थोड़ी सी नौटंकी करी थी क्लास में. डिड वी? रोटर घुमा के लटका के दिखाया था. यस यस, ओके. जब हमने उसको घुमा करके लटकाया था तो इट वाज आल्सो, एक तो घूम रहा और साथ में हैंगिंग बाय वन साइड, इट वाज आल्सो गोइंग लाइक दिस. व्हाट वाज दैट? Yes, what was that? When we had rotated it like this and we were hanging it one side, तो ये तो घूम ही रहा था, रोटर तो घूम ही रहा था, but it was also rotating like this. Do we remember? Yes, हाँ ना बोलिए कुछ. थोड़ा बहुत याद है सर. याद है? हाँ आधा वो याद स्पीड है. भी ज्यादा हो रही थी उसकी घूमने की. हाँ, स्पीड क्यों ज्यादा हो रही थी, कब ज्यादा हो रही थी? जब रोटेशन कम हो रहा था. जब रोटेशन कम हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, तो रिजिडिटी कम हो रहा है. और रिजिडिटी कम हो रहा है तो हमने ये जो बात किया था कि ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स लाइक दिस. इसको इस एंड को, क्योंकि हमने यहाँ से टांगा हुआ था, तो इस एंड को ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो उसके फोर्स जो है यूं लग रहा है और उसके रिजल्टेंट में ये प्रेसेशन जो है इट वाज हैपनिंग इन दिस वे, perpendicular to the torque. Torque was downwards and this was precession was happening perpendicular to it. एक बार हमने एग्जांपल में देखा था कि यूं घूमता है, दूसरे बार में देखा था कि यूं घूमता है. तो यूं और यूं दोनों घूमने में फर्क क्या था? Why was the difference between the two? Sir, the direction of rotation. Direction of rotation. Good. Class is good. Class is really good. So precession is directly proportional to torque. जितना torque लगाएंगे उतना precession होगा. And precession is inversely proportional to angular momentum. जितना ज्यादा घूम रहा होगा rigidity होगा, उतना कम घूमना चाहेगा. तो जब ये हाई स्पीड पे घूम रहा है तो momentum was more, angular momentum was more, I omega, omega angular velocity. When it was rotating at fast RPM, angular velocity was more, angular momentum was more, so it was moving slowly. लेकिन जैसे जैसे इसका रोटेशन कम होना शुरू हुआ, ये जल्दी जल्दी घूमने लगा और बाद में गिर ही गया. So precession P is directly proportional to torque, inversely proportional to the angular momentum H. Or of course we have already seen rigidity in space is coming by way of gyroscopic inertia, which is measured by means of angular momentum. Inertia is
something that it will continue to do what it was doing until unless an external force is applied. So rigidity. The two properties that we are talking about, rigidity in space and precession. The next topic that we have to deal with is what is the behavior of this rotor or the free gyroscope when we are rotating it and watching it over a period of time. So this is rotating like this. फ्रिक्शन है, रुक ही जाएगा. अगर इसके फ्रिक्शन को हमने ओवरकम कर लिया बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोटर लगा दिया तो पंखा जैसे ऑन करने के बाद चलता रहता है सुबह से शाम तक, वैसे ये भी चल सकता है. सो मोटर लगा के हमने इसको एंगुलर वेलोसिटी मेंटेन करा. एंगुलर वेलोसिटी हो गई, उसका मास है, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो रिजिडिटी आ जाएगी, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा. नाउ सपोज, I think, I don't remember if we have already discussed this. हमने इसको घुमा करके it is moving like this, फ्री जायरोस्कोप गिम्बल्स में यूं करके छोड़ दिया, ताला बंद कर दिया हमने कमरे का, ये घूम रहा है लगातार, ऑलवेज रोटेटिंग एट द सेम आरपीएम. 6 घंटे के बाद अगर हम कमरा खोलें तो what is expected? Remember that it is free gyroscope and it has got a property called rigidity in space. So what is expected if, let us say, we come back after 6 hours and watch this? What is expected? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या उम्मीद करते हैं, क्या मिलेगा? Yes. Anyone? सर कोई दूसरी पोजीशन पे घूम रहा होगा सर. सेम पोजीशन रहनी चाहिए. रिजिडिटी इन स्पेस हमने कहा सेम पोजीशन. सो अगर हमने इसको यूं रख करके घुमा दिया था, स्पिन एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, ये वाली जो स्पिन एक्सिस है ये वाली, अगर ये कर दिया था तो इट विल रिमेन लाइक दिस. टेबल पर रखा था, ऐसा रखा था और ऐसे ही घूमता रहेगा. सो इट विल मेंटेन द सेम ओरिएंटेशन क्योंकि रिजिडिटी इन स्पेस है. अच्छा, किसी ने कहा कि नहीं किसी दूसरे ओरिएंटेशन में होगा. हु सेड दैट? हिमांशु? मी सर, तरुण. Tarun, why do you say that it will be in some other orientation when we talk about rigidity? Why did you say that it will be moving in, it will be observed in some other orientation? सर डिफरेंट एक्सिस की वजह से ना सर, उसमें फ्री जायरोस्कोप में. हाँ, तो एक्सिस से क्या लेना देना इसको? एक्सिस ये है, रोटर ये है. अगर हमने रोटर को घुमा दिया जोर से तो एंगुलर मोमेंटम के चलते इसका प्लेन जो रोटेशन है प्लेन का वो मेंटेन रहेगा. स्पिन एक्सिस उधर देख रहा है तो उधर ही देखेगा. अगर यूं करके छोड़ दिया तो स्पिन एक्सिस इधर को है तो इधर ही रहेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? गिम्बल से क्या होता है, ये तो एक्सिस है, अलग अलग एक्सिस है. एक्सिस है दैट इट इज फ्री टू रोटेट इन एनी डायरेक्शन. इट कैन assume any kind of orientation. ये कहीं भी हो सकता है. The rotor can assume any orientation. That's why it is free gyroscope. So why would you say, you can say yes or no, or you can put it on me कि नहीं आप बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है. But let us give it a try. Why did you say that it will be observed in some other direction? Due to rotation of earth वो उसका इफेक्ट होगा. Yes, the property that we are talking about is rigidity in space. Is the earth stationary in space? No sir. No. So it is moving. मतलब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन चल रही है
तो आपको कुछ तो रिलेटिव मोशन दिखेगा ना। थिंक ऑफ दिस, सुबह 6 बजे हमने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। सनराइज वाज हैपनिंग व्हेन द स्पिन एक्सिस was pointing to sun. It was at the horizon. Sun was at the horizon. Is the sun in our galaxy is a fixed point, a star? Negative. You are right, it is not fixed point, but stars every day night जब से जन्मे हैं और हमारे बाप दादा परदादा स्टार को अपने ही जगह पे देख रहे हैं या नहीं, एवरी नाइट। Yes, sir. Yes, sir. So they are fixed points and sun is a star, so it must also be kind of fixed point. सर स्टार्स की तो दूरी बहुत है, सन की तो पास में। लेकिन है तो स्टार ही ना। दैट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, बट अगर हमने इसको सन को दिखा करके ये वाला पॉइंटर जो है वो हमने सन को दिखा दिया, तो इट इज लुकिंग एट ए स्टार। ओके चलो छोड़ दो, आप सन से नाराज हो, हमने एक स्टार को दिखा दिया वहां पे, या कोई दूसरा स्टार है जो होराइजन पे है, तो ये स्टार को देखता रहेगा फिक्स्ड पॉइंट्स में इन स्पेस। Yes, sir. Correct? Now, when the day goes by, 6 घंटे बाद जैसे सूरज चढ़ता है, सिर पे आता है, कल्मिनेट होता है, वो स्टार जो वहां था वो भी आसमान में घूमती है या नहीं? Yes, Yes. sir. That means if it is supposed to be looking at the same fixed point in space, that star, because of rotation of the earth, relatively the star has gone the other way around. And if it is supposed to be looking at the star, it must start looking there because the star is there, earth has moved. Yes, Yes sir. or no? 6 घंटे और बाद, 12 घंटे बाद, yes, सर फ्री जायरोस्कोप का भी रिलेटिव मोशन चेंज होगा विद अर्थ। exactly, वही तो बता रहे हैं, वही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। हम अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में हम स्टेशनरी हैं, ये स्टेशनरी है स्पेस के रेस्पेक्ट। तो अर्थ पे खड़े होके जो घूम रही है, हम स्टेशनरी पॉइंट को विच इज अ स्टार, वी आर वाचिंग इट मूव ओवर द नाइट। वी सी द स्टार वाज देयर, देन इट इज कमिंग देयर एंड देन सेटिंग देयर। सो दोज फिक्स्ड पॉइंट्स are getting observed as moving. Why? Because I am moving. आप ट्रेन पे बैठे हैं, ट्रेन चलती है, प्लेटफॉर्म का क्या होता है? प्लेटफॉर्म चलता दिखता है या नहीं? यस सर। आप ऑन बोर्ड खड़े रहते हैं, डेक पे रहते हैं, जहाज हिलने शुरू होती है, जेट्टी मूव होता हुआ दिखता है कि नहीं? कभी कभी होता है। ऐसे समझ में आ जाता है कि नहीं ये तो हम घूम रहे हैं। बट द थिंग इज, इट इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप अर्थ पे हैं, अर्थ पे खड़े होकर के आप इसको देख रहे हैं, आप अर्थ के साथ घूम रहे हैं, बट दिस इज रिमेनिंग फिक्स्ड इन स्पेस। सो लेट अस अज्यूम, एक्चुअली अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, जितने स्टार्स हैं दे आर सपोज टू बी फिक्स्ड पॉइंट्स। इनके बीच में अबे आवाज आ रही है, फुल आवाज है। अजय सिद्धांत क्या हो गया? नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो हम यही बोल रहे थे कि आवाज नहीं आ रही है, तो मैं उसको अपने फ्रेंड को बोला था नहीं आवाज आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। सो ऑल द स्टार्स, इनके बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो इतना नेग्लिजिबल है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, दैट ओवर द नाइट, over the years and hundreds of years, we keep on watching the stars in the same place, in the same constellation. अब पता नहीं कितने दिनों से उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, कम से कम 2000-3000 साल से, 10,000 साल से तो चल ही रही है। वो वहीं पे है, पिरामिड्स बने, ये बने, वो बने,
सब उन्हीं स्टार्स को देख के आज भी हम वैसे ही देखते हैं. So those are fixed points, and star is a fixed point. And sorry, sun is a fixed point because it is also star. We see day and night, sunrise, culmination, sunset. We are watching. Why? Because sun is there, but standing here, we are changing. तो हम जब यहाँ पे होते हैं तो हमें हॉराइजन पे दिखता है. जब हम यहाँ होते हैं तो सन हमारे सिर पे दिखता है. जब हम यहाँ होते हैं तो सेट कर रहा होता है. सन इज फिक्स्ड. इट इज द अर्थ्स मोशन which is making it look like as if this is going. अगर इसको स्टेशनरी कर दिया तो ये घूम रहा है. सन पे बैठ के देखते हैं तो एकदम खास देखते हैं कि अर्थ घूम रहा है. ये स्टेशनरी. ट्रेन पे बैठते हैं तो प्लेटफॉर्म जाती है. प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो ट्रेन जाती है. So, not going more into detail of this. Rigidity in space is the property due to which the spin axis will keep pointing to a fixed point in space. But the Earth is rotating, so with respect to Earth, there is a relative motion being shown by the rotor and the spin axis. That means, अगर ये sun को हमने दिखा दिया, if we point it to the sun, it is looking at the sun, which is a fixed point. That fixed point goes here at 12 noon. Okay? And that same fixed point goes here in the evening. It goes here in the evening. So that fixed point is only relatively moving like this. Actually, we are moving. So the rotor and the spin axis will show an apparent motion with respect to Earth, although it is fixed in space. अगर सन फिक्स्ड है स्पेस में और घूमता दिखता है और ये उस फिक्स पॉइंट को देख रहा है तो ये भी घूमता दिखेगा उस फिक्स पॉइंट के साथ ही. जैसे सन उधर तो स्पिन एक्सिस उधर, 12 घंटे में यहाँ, 24 घंटे में वापस उसी लोकेशन में. तो टेबल पे जो रख के हम गए थे एक्सपेरिमेंट में सुबह 6 बजे, तो हमें रोटर यूं चलता हुआ छोड़ के गए थे. जब 12 घंटे बाद आए तो इसको हमने देखा कि ये ऐसे घूम रहा है. और 12 घंटे बाद आए तो देखा कि पॉइंट्स उलट गए. ये वाला पॉइंट जो उधर था वो इधर आ गया. और थोड़ी देर बाद देखे 6 घंटे बाद तो देखा ये ऐसे घूम रहा है. और थोड़ी देर बाद देखा 24 hours it is back in original place. So there is an apparent motion of the spin axis due to motion of the Earth. Actually, gyroscope is rigid in space. वो actually नहीं move कर रहा है, हम उसके नीचे की जमीन चेंज कर रहे हैं. ये यहाँ पे अगर है तो अभी वर्टिकल है. हमने जमीन को यूं कर दिया तो हॉरिजॉन्टल हो गया. हमने यूं किया तो और उल्टा हो गया. तो हम उसके नीचे की जमीन घुमा रहे हैं. ये यहाँ पे फिक्स्ड है. तो अभी जो वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा वगैरह वगैरह, वो भी देखेंगे. The point where the spin axis is pointing, that point may be considered a star termed as gyro star. Can be actual star, can be an imaginary star. Fixed point just मानना है हमें, और वो fixed point आसमान में घूमता है और 24 घंटे में एक सर्किल पूरा करता है. Is that okay? Agreeable? All the fixed points in the sky show a relative motion and 24 घंटे में घूम के वापस वहीं पे आता है. Sun is a good example. सुबह 6 बजे सूरज उगती है, हर दिन सुबह उगती है, 24 घंटे में सर्किल पूरा हो जाता है. So the same circle will be repeated by this. Now what we are saying,
that fixed point in space may be referred to as a star, which can be imaginary or can be actual. That star we will term as gyro star. That means the gyro star is showing an apparent motion, और जो gyro star की motion होगी वही motion हमारे spin axis की होगी. So we can explain the movement of the spin axis in relation to the movement of the star in the sky. Now, between two positions of the same star, how do you differentiate between the two? It was here, it was here. How do you define that it when it was here, and how do you define when it was here? Navigation के concepts, please. How do you define the situation of a star? Yes. So can you repeat, sir? Sir, Yes, go ahead. Somebody was saying something. sir, So, in terms of declination and LHC of star. Okay. R angle and altitude, Yes. so to say. Altitude and Altitude and basically R angle, which we can term as azimuth angle. Correct? वो yes, sir, और azimuth. नेविगेशन में और भी जेनिथ और नादिर और क्या क्या चीजें होती है, हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे नेविगेशन के. बट अ स्टार कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द टू पैरामीटर्स. वन इज द अल्टीट्यूड, कि कितना ऊंचा है. कितना ऊंचा है तो किसके रेस्पेक्ट से? व्हाट इज द रेफरेंस फॉर कितना ऊंचा है? Horizon. होराइजन से. सो हॉरिजॉन्टल से what is the angle that the star is making? And R angle. In our case, we will call it azimuth angle, which is measured by with respect to the meridian. जैसे आप directions measure करते हैं, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 10, 15, 20, 90, 100, 1000, sorry, 200 डिग्री, 360 डिग्री. So that also the azimuth angle with respect to meridian is termed as the azimuth angle. What we are saying, that if we are looking at a star there, let us say the star is here in this corner, so horizon से कितना ऊपर है स्टार? यहाँ पे था, तो horizon से हम यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, horizon से इतना ऊपर है, horizon से इतना ऊपर है, so this is altitude. Correct? Yes, sir. Now let us say this is the meridian, और यहां से हम देख रहे थे, यहां से इस तरफ को था थोड़ा, that means इधर, और थोड़ा सा इस तरफ को भी है, मेरी तरफ. So horizontal से थोड़ा एंगल और मेरिडियन से थोड़ा एंगल. So the angle that it is making in a horizontal plane with respect to the meridian, the angle that it is making is one parameter, azimuth angle, and with respect to ground in vertical plane, the angle it is making. So these are the two parameters, altitude and azimuth angle. So if we have now the spin axis and it is in this condition looking at a star, can we say that the spin axis has an angle with respect to ground, with respect Yes. to horizontal? Yes, sir. अगर ये इस condition में था, तो is it making an angle with respect to horizontal?
Yes, sir. Yes, sir. This is called, this angle is called tilt angle. The angle that तिरछा होता है, tilt मतलब तिरछा होना, so सीधा नहीं हो करके it is tilted. So the angle that the spin axis is making with the horizontal, the angle that it is making with the horizontal is called tilt angle. This angle is the tilt angle. If it was kept here someplace on the earth, so the tilt angle is the angle that it is making with respect to ground. At the same time, the angle that it is making with respect to meridian, अब ये ऊपर तो हो गई, लेकिन ये इधर को देख सकता है, उधर को देख सकता है, कहीं भी देख सकता है. ये वर्टिकल एंगल हो गया, वर्टिकल एंगल हो गया. अब इस वर्टिकल एंगल के साथ साथ इट कैन सी हेयर 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 हेयर. एंगल तो वर्टिकल एंगल तो वही है, टिल्ट एंगल वही है, बट इट कैन लुक हेयर हेयर. तो इस एंगल पे वो कहीं भी देख सकता है. So direction we need to measure in horizontal plane also, and there we measure it with respect to the meridian. So this coins to us two terms: tilting, angle that it is making with respect to ground, and angle that it is making with respect to meridian in horizontal plane. In horizontal plane, अगर इधर को spin axis, इधर को, so एक spin axis का इतना drift angle है. Okay, let us go first with the definition. So the tilt is the angle that the spin axis makes with respect to the horizontal, or adding one more word, tilt is the angle that it makes with respect to the horizontal at any point of time. It may be looking here, कहीं भी देख सकता है, but what we are interested in is the angle in vertical plane. Tilt is the angle in the vertical plane with respect to horizontal, which the spin axis makes. Tilt angle, irrespective of which direction it is looking in. So ये यहाँ कहीं भी देख सकता है, but ये angle fixed हो गया. So how do we define this angle? We define it by azimuth angle. An azimuth angle is the angle that the spin axis makes with respect to meridian in a horizontal plane. इधर इस प्लेन में मेरिडियन के साथ जो एंगल बना रहा है, मेरिडियन से इतना डिग्री इधर या इतना डिग्री इधर को जा रहा है, that is called drift angle. Tilting is denoted by TG, capital T, small g. Drifting is denoted by DR, capital D, small r. Are we clear about tilting and drifting, or you want to ask any clarification on that? No, sir, understood. Understood. Now suppose अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, टेबल पे हमने छोड़ दिया इसको ऐसे, the pointer looking in that direction. In that direction, what is there? The direction in which the spin axis is looking. What is that direction? Azimuth. Tilt.
Gyro star. Yes, gyros. Gyro star. It can be actual or it can be imaginary, but उस point को जो देख रहा है वो है gyro star. वहां है तो वहीं देखता रहेगा. But because of rotation of the earth, did it make one complete circle in 24 hours? Yes, sir. Okay. That means the gyro star is moving in the sky at certain rate. स्टार का एक चक्कर कितने देर में पूरा होता है? 24 hours. 24 hours. 24 hours में एक चक्कर पूरा हो रहा है स्टार का, and it will keep looking at that star as it is happening. तो 24 घंटे में ये भी घूम करके वापस आएगा कि नहीं? और जब 24 घंटे में उधर को स्टार आया वापस, तो ये भी वहीं अभी देख रहा है. That means a spin axis which has got a fixed tilt angle and a drift angle will not remain so. Why? Because it will keep on moving with respect with the star or gyro star in the sky. Is it making sense? Yes, sir. So not only tilt, but we also have another phenomena happening, which we will call tilting, ing. It is happening, not it is fixed, but it is happening. And it is happening at what rate? 360 degrees in 24 hours. That means per hour is 15 degrees. Yes, sir. Okay. So the spin axis is not fixed. It is showing a movement like this. And the movement is happening at the rate of 15 degrees per hour or 15 minutes of angle per minute of time. Quarter of an angle per minute or 15 degrees of angle per hour. अभी तक ठीक है हम लोग? Yes, sir. Okay, so what we will do, we'll try to capture this on the slide. We will see how it flows. Then we will study the behavior of the spin axis or free gyroscope on the earth. Why? What is happening with the earth? अभी तो टेबल पे रखा था, वो हवा में तो थोड़ी था. But the behavior of the free gyroscope changes with different places change. जैसे जैसे जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर होता है स्पिन एक्सिस का. So what we can take our एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन सा स्पॉट ढूंढे? तो अर्थ में 3 ही स्पॉट हैं बेसिकली. एक है इक्वेटर, दूसरा है Poles. पोल और तीसरा है इन बिटवीन. वो 40 डिग्री से 45 डिग्री, 85 डिग्री, 15 डिग्री, कुछ भी हो सकता है. this end and everything in between. So we will see the behavior of this free gyroscope in the 3 conditions: at equator, at poles, and on intermediate latitudes. Are we good? So allow me to share the screen. Let me find out the file first. Please bear with me. Okay. All right.
स्क्रीन दिख रही है आपको? आई थिंक वी हैव डन दिस अर्लियर. ये सब देख चुके हैं. आई एम जंपिंग फ्यू ऑफ दिस. टॉर्क, gyroscopic. I think we have completed this. Please a quick reading डाल लीजिए. नेक्स्ट. इतना गर्मी है जी. एसी बंद करो तो गर्मी, एसी चला तो शोर. नेक्स्ट. 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 तो यू आर नॉट फेमिलियर विद दिस. प्रॉपर्टीज बात कर ही ली, इसलिए हम जंप कर लेते हैं जरा. सेशन यहां तक प्रिसेशन. नेक्स्ट. Behavior of free gyroscope on rotating Earth. Just take a look at the slides and see if it is understandable. जो concept अभी हमने बात किया था उसी के ऊपर है. If you have any doubt, please do ask me. Next. 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 Here, one thing I would like to say. This concept of tilting and drifting is of prime importance. If you want to understand the compass, ये tilting और drifting का relationship बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरे थ्योरी में कैसे काम करता है बाद में न्यूमेरिकल से आएगा तो हो सकता है उतना नहीं, लेकिन this concept is necessary to understand. Next. Now, as we have seen, all the stars move in a circular path in the sky. ये सर्किल में जाता है, ये सर्किल में जाता है.
दिस इज सेलेस्टियल हेमिस्फीयर, जो आकाश है, आकाश में आपको जो डोम दिख रहा है वो है, और उसमें कुछ स्टार्स हैं, X1, X2 और X3. All these are stars basically, and they move in circular paths in the sky. Are you able to relate this with your understanding? Anji? Yes, sir. Okay, good. So, along with this, the spin axis also will trace a circular path. मान लीजिए आसमान में एक कागज का डोम है और एक लेजर की लाइट निकल रही है हमारे एक्सिस से, तो आकाश में जो शेप बनेगा सर्कुलर स्फेरिकल कैनवस पे on the in the sky, what kind of shape will it have? What Yes, kind sir. of shape? Circles. Again, circle. Very good. So the spin axis of the free gyroscope traces a circular path in the celestial hemisphere. Talking about tilting and drifting. Now that we have understood that a free gyroscope which is rigid in space or which has got a property of rigidity in space will remain fixed in the space, but with respect to Earth, there will be an apparent motion. And that we have statically, what is the condition of the spin axis? Can be described by tilt angle and drift angle. Tilt angle, the angle that the spin axis makes with the horizontal. So that's a vertical plane में angle. जमीन से कितना ऊपर? Altitude of the star and tilt angle of the spin axis, same thing. Other one we have already talked about, angle in horizontal plane, which is with respect to meridian. Tilt and drift. Meridian से क्यों? Because all the meridians are leading to the pole. So उसको हम ट्रू नॉर्थ के रेस्पेक्ट से मानते हैं. Are we good on this? Tilt and azimuth angle or drift angle? Yes, sir. Anyone else having any trouble? Any explanation required? सर ये अजीमुथ में ट्रू नॉर्थ की ओर के साथ एंगल है सर, आपने बताया नहीं था सर. बेसिकली मान लीजिए ये अर्थ है, ये मेरिडियन है, आपने एक जायरोस्कोप को रखा यहाँ पे. With respect to this, is this aligned with the true north? नहीं समझ में आया. Okay, so okay, just read on these slides. I'm going to explain that once again. जो ट्रू नॉर्थ है उसके रेस्पेक्ट में एजिमुथ एंगल जो हम मेजर कर रहे हैं, ये ट्रू नॉर्थ के बेसिस पे कैसे है? आपका जहाज अगर 045 कर रहा है तो आप कैसे बोलते हैं, किसके रेफरेंस में आप 045 डिग्री कर रहे हैं? ट्रू नॉर्थ. मान लीजिए जहाज इज अ स्पिन एक्सिस ऑफ अ रोटर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. सिंस जहाज को हम ले रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल तो होगा,
हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में टिल्ट एंगल कितनी होगी जहाज की? सॉरी, पानी वाला जहाज जो है वो तो लेवल होएगा ना, हॉरिजॉन्टल के हॉरिजॉन्टल ही रहेगा ना वो। तो टिल्ट एंगल इज 0 देयर, बट हेडिंग ऑफ द शिप इज 045. You are saying you are measuring it with the true north. तो जहाज को, अगर जहाज का डायरेक्शन हम मेजर कर सकते हैं, अगर जहाज का डायरेक्शन हम मेजर कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ, और जहाज को हम मेजर कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ, then why can't we measure the spin axis of a rotor with respect to true north? मैं फिर से बना देता हूं इसको ड्राइंग को, so that there is no confusion. This is true north. The spin axis of the rotor, this is the rotor, and the spin axis is pointing in this direction. So can we measure this angle or not? Yes, sir. This, what you have just measured, this angle is the drift angle or azimuth angle, this one. Angle between the spin axis and the meridian, or angle that it makes with respect to true north. Is it okay? सर इसी रिलेशन को बता देंगे, टिल्ट एंगल पे कितना होगा इसी में? इसी में टिल्ट एंगल कुछ भी 0 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है. अब हम एग्जिट करते हैं यहाँ से, क्योंकि जो मैं बताना चाहता हूँ that will require little bit of explanation, visual explanation. पेन कहाँ गया मेरा? I said this is the spin axis. रोटर का काम हो गया. रोटर जो हमने भारी बनाया था और हाई आरपीएम पे घुमाया, उससे हमें क्या मिली? रिजिडिटी इन स्पेस. उससे हमें मिला प्रिसेशन का प्रॉपर्टी. तो रोटर अब हमेशा घूम रहा है. जब भी मैं एक पेन पकड़ करके दिखाऊंगा ऐसे, you are looking at the spin axis and the rotor is rotating about this in this plane perpendicular to this. So as I said, right now, is this horizontal or not? अर्थ के सरफेस के बराबर. Is it horizontal or not with respect to the ground? ग्राउंड का सरफेस ये है और इसका भी सरफेस ये है. तो with respect to horizontal, what angle it is making? Zero, sir. 0. If the spin axis is rotating like this with respect to horizontal, what kind of angle it is making? 90 degrees. 90 degree. So 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. अब ये कितना बना रहा है? With respect to horizontal, how much it is making? It started from here. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 तो हो गया और थोड़ा इधर को झुक गया. What is the angle it is making right now with respect to horizontal? तो 70 ना, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल से तो वही छोटा एंगल रहेगा. छोटा एंगल. So tilt angle cannot be more than 90 degree. यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 90 हुआ, यहाँ से 80, 70, 60,
करते करते 0 हो जाए. So it cannot be more than 90. So if it is like this and the tilt angle is into the ground, not above the ground, but it is making an angle with respect to horizontal, but below the horizontal. Horizontal ये होगा and the spin axis is tilted like this. Horizontal is this and it is tilted like this. Is it some angle that it is making with respect to the horizontal? It is below this. So that 90 which is above are all positive tilting, and everything that was below the horizon, this 180 degrees, or rather 90 degrees and less 90 degrees, 80, 70, 0. 90 degree, 80, 70, 60, 40, 20, 10, 0. So this side is all negative tilting and this side is all positive tilting. These are the conventions of naming giving a sign to the tilting. We say positive tilting, that means the spin axis is lifted above the ground. If we say minus tilting is negative, that means it is below the ground. Is it clear? Yes? नहीं आया समझ में? नहीं आया तो बोल सकते हैं. सर ये irrespective of hemisphere है ना सर? Irrespective of hemisphere, exactly, एकदम totally. हमने देखा था यहाँ भी हॉरिजॉन्टल है, या तो ये यहाँ पे जमीन से ऊपर होएगा या जमीन के नीचे होएगा. सरफेस तो सरफेस है, हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल है, वो साउथ हेमिस्फीयर में हो नॉर्थ में हो. So tilting is only the angle that it is making with the horizontal. It has got no role. I mean, latitude has got no role to play in that. It is just the horizontal के respect में. Are we good? हाँ जी सर. Yes, sir. Okay. Yes sir. सोच के बताइएगा. 15 मिनट बाद मिलते हैं हम लोग, और 15 मिनट के बाद हम